MVP will not be able to use the zipline. They have to deal with our MVP. With the booyah anyway. Blessed by the zone at one point, then forced to snatch that zone advantage back from Ascendants. They claw their way back to the top with 14 eliminations. Etazo, Fire, Rupesh, and Tushar finally prove that the advantage that was gifted to them by the Free Fire Max gods cannot be snatched away. I mean, I have never seen Max 7 be so overpowerful. I know it's an Right? automatic shotgun, and M590 is basically like the gods of all the shotguns. Each and every one loves to use that because if you click it on the head, the opponent is done for. So I'm super happy to see all of those actions come right in front of us. And wait a second, Tushar, this dude, he was constantly running around, Chris, keeping tabs on where the opponents are, checking for the rock cover, so called, the amazing ones, but instantly they were demolished. And MVPs, well, for sure, they are going to be the MVPs for the previous map. Getting the booyah was super important, plus the amount of eliminations that they have bagged. It's a big game for them. Massive. Yeah, massive game indeed. I mean, I'm surprised that MVP were able to keep so many of their players alive in the last circle. This definitely is not what a standard game of Free Fire Max looks like. I mean,
The rotations in this map is just squeaky clean. If you had, then basically you have already won the map. All right, let's see who's going to win this map. Next up, the most aggressive one of the lobby. Coming up on your screens now. I don't see any potential drop flashes just yet. Unique going towards mud side. Team NKG going towards Rushdown. Wolves going towards Mortar Ruins. Wolves at least made it to the mid game last time. Let's see if they can do the same now. Rise Esports uncontested in Decker Square. Oh, there is a potential clash happening in Farmtopia. R2V and MVP, but those are just two people of those two teams. Because R2V, the rest of their members are in the museum. Only one of them is over here in Farmtopia. And the same can be said for the other team as well. They have sent two of their members away. It's going to be a 3v3 over here as Ascendants and R2V lock horns. Yeah, unfortunately. Yeah, unfortunately, that's the risk of a drop clash. That's why a lot of these teams are avoiding it. That's why we see a very silent first few minutes in this game. Although there have been days where there's like 3 teams hot dropping in one spot, and the start itself is so explosive you barely get a chance to catch your breath. I prefer those games, of course, but I'm not lucky enough to get them all the time. Oh, I say that, and Ascendants have a new contester. Evolution coming up in their vicinity. Okay, so there might just be a clash yet. Mm-hmm. Mm. One elimination secure. Meanwhile, Ascendants are getting full sent on. Rishi forced to back away. The grenade launcher is not going to find him yet, but Shanku tries to pre-fire around the corner. Does he know that Rishi is no longer alone anymore? Naman has joined him. He's trying to break the glue wall preemptively so he can then go ahead and peek from the left side, but they both decide to fight each other on the right. They're running rings around this little Rosie. And this compound, it's going to be splattered red. They find the first one. Oh, good damage dealt. Instant glue wall deployed. Now the grenade launcher comes through, but the chrono protects them anyway. The preemptive time turner helping them stay alive for just a second longer. Kind of reminding me that at least there's a really good cover that can be provided. Evolve. Have they met their match? Naman, he's the first one to falter right there, but the others, they're slowly moving in. The fight is going to break down so bad that Team Evolution, they are going to get most of the spoil. It's another battle right in front. Sahil, close quarter range. Yes, I do see Legend right in front, and this battle will not see another day or time as a charge buster instantly decimates the opponent. Yeah, Ascendants have survived the encounter for now, but not unscathed. Evolution also losing a couple of members. At least they managed to get one res back. Pintu, he was the only one from the Ascendants team who was not a part of this cluster. The other 3 were fighting over here while Pintu was providing cover fire from afar. So he escapes the moment he loses 2 of his players and instantly rushes towards the vending machine. So Ascendants are able to get some recovery, but the moment I say that, Legend is getting shot and he's solo on health. Luckily, Shanku doesn't have a Moko, otherwise Legend would be toast. At least he gets a chance to heal himself, but there's no escape. The glue wall breaks, and so does Legend's skull. I mean, he basically have the infinity glitch of the glue wall. Again and again, deploy it so that he can be safe, and that's the mistake that he usually made. But it's all right. It can be completely nullified as long as he's alive in the team.
RQX on the other end, 5 eliminations. They are starting pretty strong, and getting Jason solo was super important as well. Titan. Well, that weapon is basically used to heal your friends, but he's just completely taking things up a notch. And he's gonna not just take things up a notch, but like put the burner on full blast. At least when it comes to R2V. He's got them pressured from this high ground. But even after getting that knock, he wasn't able to, confirm the elimination. So he might as well just reposition now. Oh no, Titan goes down. That too against NKG. They were not ready for this third party. I mean, technically it's not a third party yet. They haven't closed in the distance, but Titan still goes down. Are NKG really sending only one player across this bridge? That's bold. Oh yeah, there the others are. Yeah, one player walked across the bridge, the other one's gonna fly in. And now all of a sudden, Rapid Quest X are getting full send. They were not ready for this at all. They just got good weapons just about now. The vault opened, they got good weapons, and NKG, they didn't want to spend 1200 Free Fire coins. Absolutely not. It's better to steal from the opponents, and that's what they did. Insane powers, looking at all of these shenanigans, taking a couple of shots, but still they're inside their vicinity. They're not full sending it just yet. And Bulls on the other end, like a pack, sticking close against a Rise. You need those. Yeah, Rise Esports want to keep control of Zipway. Still one of the better compounds to hold. Oh no, Ascendants get eliminated after such a good game last time. For them to go out in the first spot is indeed tragic, but Rise Esports continue to dominate. Johan has become the damage king already with 2,000 plus in the first few minutes of the game already. Hello? Oh my god, now Matt got also showing us what he's made of. Nivesh gets the elimination onto Spoke. Everybody on Rise Esports winning their individual duels. Such confidence. This dude does not have a stop button at all. His character keeps moving from one point of the map to the other. No stops at all. He instantly pummels down a couple of the players of Wolves, and now they're looking for more coins. Oh, the sadness. Oh, they can revive both the players, but it's going to be the cheap buyout. Yeah, unless Predator has some more money of his own. But again, you can only afford to revive your players now. After this, after the third circle, it becomes very difficult with only like 3 revival points in the map. So you can still afford to tank some amount of zone damage and, go out of your way to get your teammates back online. But Rise Esports don't need to do that. Chilling, looting. I think they're fully leveled up. I mean, look at the amount of money, the amount of... Okay, the utility is missing. They could use more nades. But, yeah. Their armor is going to be upgraded soon. It's just level 1 now. They should be back at like level 3 in no time after using that care package. But RTX, now they're getting attacked by Black Flag Army. UAV deployed, so at least RTX know about the inbound attack. But what can they do? Even with the information, they lose Yahi. And Black Flag Army get the confirmation. All the confirmations, it's coming through. Mud site, one of the places where usually whenever a team is heading towards, their information is known in a jiffy. Let's see about how well the Deca Scare has been contested. Team Evolution, they're trying to rotate. They're reaching in towards such good compounds. And RTX on the other end, the mud side fight continues. RTX 5 eliminations instantly buys in the fallen comrade as well. And this is a really good start that they required. RTX in the previous game, they could not do much. Eliminations, yes, we did see it, but not in a full-fledged, full send away. So Shyam, he better do something really good. Black Flag Army, what you doing? You did see a player sitting right on top, and all of a sudden, Ronix, he's running away for his life. Yeah, I hope he can escape because RTX will soon be hot on his heels. Even the Wolves are here in the vicinity, so Black Flag Army, their efforts just need so much more, even though they've given everything. Phoenix can get the revive onto Roger, but that vending machine is now being contested. Predator is hot on Ronix's heels. Nice shot with the AWM up close. Great way to deal with the pressure. But Black Flag Army, their troubles are not over just yet. Yeah, he once again tries to rush into another player while getting sniped from afar. Black Flag Army are really covering each other well. Very well. And it's all thanks to Rhinox.
And this dude sniping insane, watching all the corners, knowing where the opponents are heading towards. And Black Flag Army, they've completely shut down the opponents who were there towards mud side, even though they have tucked their tails behind and they ran away from those corners. But still, that's a really good movement coming in from their end. Black Flag Army, confident start, and that's what they required for this following map. Black Flag Army. Well, at least it's not the end of the world for them just yet. Whatever problems they're facing, they can recover from them. Insane power. Well, they are taking losses against Evolution Esports. And look at that. With those few eliminations, Sahil has just become the damage leader now, overtaking Arise Esports. Oh no, Insane Power get completely eliminated. Oh my lord. It's not just Evolution Esports, but also R2V working in tandem with them. Oh, Insane Power, one of the strongest teams in the lobby, already out. We have two big names going out already, man. Two of the best performing teams of the last game will no longer be even in the third circle. And the MVPs, they're getting the spoil, they're getting the fair share. Oh boy, I don't think so. Wolves can even survive the wrath of two teams taking pot shots against them. And look at the way Itazo is just capitalizing one frag after the other. It's just constant number game that this team is gaining around the corners. And the others, even though they're sitting inside the compound, they're just trying to make some turret. What is that, a human turret? Oh, wow. Oh no, Shanku gets the knock onto copy. Instant res comes through, but the full send is not here just yet. So R2V get a ample of time to recover from that loss. But Team Evolution are gonna keep pressuring them now. This tiny window, this tiny angle, it's gonna be peaked by so many players again and again. But look at that Black Flag Army going for the full send against the Wolves. Where is that even happening? Black Flag Army are fighting against MVPs as well now. Very soon, they should be able to get inside this compound. But MVP versus Unique is a completely different beast that Unique are not prepared for. They goo all the staircases. They get the red onto Villain and Rex. But Danav cannot be picked back up. Arise Esports. Oh my god, they are fighting so many people at this point. Like, even though they're inside the house, Arise Esports are trying to take shots at people who have no business even fighting them. They're trying to take a piece of this pie against Unique and Black Flag Army. And because of this pressure, because Black Flag Army are also shooting from the other side, poor Unique players cannot get inside the house. And this inevitably benefits MVPs who get a chance to rest themselves. Like, it's so funny how much Black Flag Army are helping out MVP over here. You see, you need a secret code in order to enter the house, and I don't think so they have it. If they had, they would have been inside. Unfortunately, they don't. So the level 1 or the level 2 of the house is completely contested. Arise, they have a very nice spot for Mayhem, and they might as well can capitalize, getting the booyah as well. The others, they need to head inside the circle, and they're just chilling there on top, getting the height advantage. And if that carries on, then it's just going to be insane. But Unique have been completely peppered down, eliminated as the MVPs of the previous game as well. They are just constantly so well played. Yeah, MVP. At least this time they are not blessed by the zone gods, but they've managed to clear out Black Flag Army and force them to go elsewhere. Black Flag Army, this actually works out really well for them. They take the high ground, they use the mini launch pad, get up on top of the bridge, and from here, only Arise Esports can be a real threat to them. Oh wait, as I say that, Arise Esports drop down from the bridge. They're gonna hang around under the bridge now. So Black Flag Army is completely safe. They might just have one of the best positions in the entire game now. Good spots. And NKG, the nade. Oh, all right, he's safe. For a second, I thought it was his own nade, and if he would have thrown it on his feet, might have been a very wrong sight for him. But in any which case, Maxi God just rushing forward, and Team Evolution, they're trying to take down NKG. Good shots coming through, and I'm just loving the confidence that Team Evolution have, but nothing is a match for NKG. Each and every one healthy and surviving, and that fight was over in seconds. Oh my god, Black Flag Army, they step into the trap laid by Arise Esports using the landmine so well, and Ranox is down. And this gives NKG so much to work with. Look at that. They've just cleared up their building, and now the circle's moving towards them. So NKG are just going to chill for 30 seconds while all the other teams beat each other up. Even R2V, after having control of this house for such a long time, will be forced to vacate and move in the direction of NKG. But before they can do that, they're going to pressure MVP as much as they can.
Arise Esports and Black Flag Army, they both were trying to fight for the control of this bridge. But what's going to happen now? Oh, no. Poor Phoenix drops down. gone. And as soon as he does, MVP shoot them down. The rest of the Black Flag Army goes down to Arise Esports, who now have full control of this bridge. But what's going to happen when they're forced to drop? They will be landing right on top of the heads of MVP players. And MVP, you better be aware. You better be vigilant. They have 10 eliminations. They're not here just with a fluke of luck. Absolutely not. Fighting those battles tooth and nail, getting those eliminations, and they're right in front of R2V. This battle, it's going to be accounted for as well. They're showing up for it. They're slowly but surely reaching in close inside the gas station, but nothing is helping them to reach close. They're getting gassed out. They have very low HP. There's one player who has rushed down the throats of R2V, but it doesn't matter. They still have the prime spot. They're still inside the circle, and there are others. They're still outside thinking, what wrong have they done? Yeah, and NKG can do no wrong at this point. Money and Aleem singing the songs of death with their shotguns. It's a bloody orchestra over here. On fire, gets extinguished. MVP out. Arise Esports out. They wiped the floor with everyone. NKG, what they couldn't do in the previous game, they have completely flipped the script and taken the booyah. My, oh my, high stakes and the adrenaline rush that they had, lovely shots. And it was one squad after the other, not a small one, a big squad. We have seen Aleem. I have seen him perform. And this dude, whenever he comes right in front in the lobby, he just decimates the opponents. What a lovely game from them. 33 elimination points. 33 elimination points! 45 in total. That is crazy amount of elimination and points that they're racked up in a single game, making history or just equalizing the history that we could see yesterday. Oh my God. Did I predict them for the wrong game? I had them on my predictions in the previous game. I put them on the third spot. But now they just show up out of nowhere and completely decimate the entire lobby. Like, yes, sure, they had a great zone advantage. But unlike MVP in the previous game, who also had the zone advantage and only got 14 eliminations out of it, NKG really showed us how much value you can extract out of the zone when it lands right on top of you. And oh my God, this is what, you're supposed to strike the iron when it's hot. And NKG have done exactly that. If only I predicted them for this game instead of the previous one, oh my God, I would have been like a literal prediction god right now. But hey, life has funny ways of surprising us. And I was thoroughly surprised by NKG's performance. I had expectations from them, but 33 is not something that even I was expecting. So yeah, that was not on my bingo card, man. Absolutely, bro. 33 eliminations and 12 career points secured. So let's see who the MVP is. 12 total eliminations by this lad. Money. I mean, put your money where your mouth is. 5,917 damage and 11 assists with the form that he was going further with. 11 assists. How? Why? Where? 12 eliminations. Dude took battles against 23 or 23 total members. What happened to my mathematics? Yeah, no. I don't blame your maths, bro. Like, this game was so insane that you really can't keep track of how many victims Money has on his little list. He was targeting so many teams. Like, can you keep in mind that Arise Esports and Black Flag Army, they also had decent spots, right, on top of that bridge. Yeah, sure, Black Flag Army were forced to drop down, MVPs wiped them, no problem. But Arise Esports still had their launch pads. They still had a great position. And NKG managed to punish them as well. Like, sure, NKG would have been able to deal with Evolution and R2V anyway, right? Because they were in their line of fire. And Revolution and R2V had to come towards NKG regardless. But Arise and Black Flag Army were never supposed to be their victims. They still get the eliminations on them. That's why they have 33. It's ridiculous. Like, Arise Esports, a team that was literally on the high ground, have only 15. They should have had so much more. Black Flag Army, 14 eliminations, I'm not surprised. I mean, they were hunting down a lot of these teams from the start of the game, right? They got to like 10 eliminations in the first 3 circles itself. So they didn't do much in the last circle. MVP, again, decent zone, 10 eliminations is exactly what I expected from them. But what happened to Team Evolution and R2V? Like, even though they were supposed to contest against NKG and take those, areas away from them, they just
could not make a dent, and that's where the firepower of NKG comes through. Even though this circle is going to tell you the story of RTX and NKG, trust me, RTX was not a factor at all. They had nothing going for them. They just happened to survive up until the end because every other team was falling prey to NKG. Like, look at the kill disparity. 3 eliminations versus so many from NKG. Yeah, 5-2, 4-2. I mean, those numbers, the way they were rotating from one circle to the another, they just had constant taps on the opponents, moving in towards the compounds, getting the eliminations, and then from there on, moving to another target. So I don't know what was going on, but for sure, they were like the headhunters, constantly going in for the fights, getting those eliminations. Overall, the way they have performed, it has for sure impressed each and every one who's watching this stream. And this is today's overall standings, right? NKG Esports with 48. The previous game itself helped them get the bump all the way towards the top spot, plus 9 places. What they have moved is just mountains. Exactly. I mean, like, only 3 points in the first game. And they were the first team to get eliminated, by the way, in the previous game. Oh, yeah. And from 12th spot to the literal number 1 spot, that is too big of a Booyah comeback story. But again, it's just 2 games, right? In 2 games, if they've done 48 points, I think that's pretty impressive. They're going on track. However, we are yet to see. You can't exactly give them all the credit right now because they have been somewhat inconsistent. Literally between 12th and the first spot, they've jumped up 9 spots. I haven't seen such a big jump before. Not in 2 games. MVPs are still consistent. yes. You know, they're getting like an average of 20 something per game. Winning the Booyah in the previous game with 14. This time also doing really well. So yeah, MVPs and Arise Esports are doing really well for themselves. RTX surprisingly keeping up with those 2 teams. So yeah, the real surprise over here was RTX for me. But NKG, oh my god, what a jump, bro. What a jump, man. What if you had your own AI shopping assistant, saving you time and money? Here's by Hutcake, the तो उसमें आप वो रागी का बॉल उसमें बीच में घी डाल के थोड़ा स्पाइसी चिकन करी होता है, ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए वो दाल होती है, ठीक है, सिंपल फॉर वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस जो होते हैं वो मैं बता रहा हूं. It's so good. Thank you so much for the super chat, Nivinita Ray ji. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for sending me some singara. Ayush Vai. Fine, man. That guy is so good, right? He's the MVP usually, he's the IGL usually in all of the teams wherever he goes, and has tons of experience. And even through all of that, he's not able to understand or analyze what's happening in this lobby. Speaks a lot for itself. Yeah, I mean, it's not like Insane Power and Arise Esports are having problems just yet. They're not in danger. But we kind of expected them to dominate the whole thing. We kind of expected them to like smurf in this entire lobby. So yeah, that's not happening. They're not as dominant as we thought they would be. That being said, though, I can kind of understand why Insane Power is not able to do it just yet. I mean, the XDevan had to form this team just a day before the city qualifiers, so they haven't had that much time together, right? So they're not firing on all cylinders yet, but they're still doing pretty well for themselves. MVP, at least they were able to get to a pretty high standing in the second game as well. You know, NKG was super inconsistent, getting eliminated very early on and then getting a Booyah. So I really don't know what to make of it. I guess this would be a good acid test. You know, if they drop into Shrines, then they'll be clashing against X-Divine's team. And then we can finally figure out whether this Booyah was a fluke or not. Okay, for starters, just head into the lobby wherever NKG is, take a fight against them, see whether it's fluke or not, because I personally would not be doing that. They are super good when it comes to the elimination game of वेदर आप ओल्ड हैम्पटन जाओ, वहाँ पे एक टीम पहले से रहेगी. वेदर आप यहाँ पे जो 6 हाउसेज रहते हैं जो कि रिफाइनरी और साथ ही साथ यहाँ पे श्राइन्स के बीच में नजर आते हैं, बे फ्रंट के ठीक ऊपर वाले एरिया में, तो वहाँ पे भी आप जाओगे, वहाँ पे भी अपोनेंट्स रहते हैं. तो मुझे लगता है कि दिक्कत तो होने वाली है. काफी सारे क्लैशेस होंगे. उन क्लैशेस को इधर आपको अवॉइड करना है या तो आपको वो क्लैशेस निकालने हैं. बट चलिए रिगन, वक्त आ चुका है अगले मुकाबले में जाने का. बिल्कुल, देखिए अगले मुकाबले की शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है और हम लोग भी इस चीज का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा खेल है और यहाँ से कमबैक्स की लड़ियां शुरू होने वाली है. तो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए, क्योंकि तीसरा खेल आप सभी के समक्ष आने वाला है. द मैप ऑफ कलाहारी इज कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन और गेम हो चुका है शुरू.
बस कुछ ही क्षण में आपके समक्ष आएगा वो खेल, वो प्लेन पाथ जहां से सभी टीम्स वो पकड़ बनाएंगी अपनी अपनी ड्रॉप लोकेशंस के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी टीम्स ने अपने ड्रॉप लोकेशंस पे जाना शुरू कर दिया है। कलारी का मुकाबला, ये पटल किसके पक्ष में जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और प्लेन पाथ की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा सेंट्रलाइज हमें देखने को मिलेगा, एक छोर से दूसरे छोर तक ये जा रहा है और काफी अच्छे तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड ये प्लेन पाथ है, बट हाँ क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आरटीएक्स esports एमवीपी से भिड़ंत लेती हुई नजर आने वाली है। वहीं अगर हम बात करें एक और भिड़ंत कमांड पोस्ट के इलाके पे भी बेहद जल्द आ सकती है, बट वही रिफाइनरी का इलाका वो भी कहीं ना कहीं एक हाई टियर फाइट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ यहाँ पे देखिए R2B वर्सेस BFA तो हो ही रहा है, साथ ही साथ इनसीन पावर वर्सेस अराइज esports हमको श्राइन्स में देखने को मिला। मल्टीपल टीम्स आपस में कोलाइड जरूर कर रही हैं। ये कोलिजन इस वक्त इस पूरे मैप को हिला के रख देगा। आगे जाते हुए ओ फिनिक्स गलत जगह बैठे थे, टाइम टर्नर की वजह से बाल बचे हैं। यहाँ पे एक अच्छा डिफेंस यहाँ पे देखने को मिला, अच्छे रिफ्लेक्स देखने को मिले। आइको सामने होने वाले R2B की तरफ से ऊपर भी निगाहें होने वाली, कहीं हुकगन का इस्तेमाल करके हाइट से कोई टेकडाउन उनको ना कर ले। बिल्डिंग मशीन को कैप्चर किया जा रहा है ताकि अगर कोई खिलाड़ी वहां पे अगर एलिमिनेट भी होता है उनकी टीम का तो रिवाइवल जरूर कर सके। आइको सामने कोई गलती नहीं करना चाहते, एक तरफ आइको दूसरी तरफ न्यूनॉन होने वाले, और वो भी यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन में खड़े हुए हैं। प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही, कॉपी वो भी आगे आ रहे हैं और जरूर एक इंटेल दिया गया होगा, कॉल आउट आया होगा कि आप बस फाइट में थोड़ा सा होल्ड करे रहिए। मैं भी इस फाइट को ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन होल्ड करना मुश्किल हो सकता है। वेलियंट आज के साथ चार्ज किया, आइको को भनक भी नहीं लगी, टेक डाउन किया। अब यहाँ पे देखिए न्यूनॉन को भी नॉक डाउन किया जाएगा। दो खिलाड़ियों को यहाँ पे जो है घुट्टों पे लाके एलिमिनेशन निकाल लिए गए। बीएफए 3 एलिमिनेशन के साथ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। बीएफए ने सेकेंड गेम से जो यहाँ पे अपना फायर पावर दिखाया, जो अपना गन गेम दिखाया है, काबिल तारीफ। बिल्कुल, देखिए तारीफ करनी बनती भी है, बिकॉज पहले खेल के बाद आप अपने आप को संभालते हैं और उसके बाद कमबैक करना शुरू करते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया खेल रहता है। बट फिलहाल एमवीपी के 2 प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सके एनकेजी के खिलाड़ी असेंडेंट से भिड़ंत लेते हुए नजर आ रहे हैं। और एनकेजी इस वक्त एक ऐसी टीम है जिसने एक बड़ा मार्जिन सेट कर दिया बाकी की टीम्स के लिए। देखिए 49 टोटल पॉइंट्स पे ये लोग बैठे हुए हैं और बाकी की सभी टीम्स उन्हें धीरे धीरे आगे आना पड़ेगा। और लीजिए 49 में कह ही रहा था, अब तो अर्धशतक भी लगा दिया, 50 अंक आ चुके हैं इनके पास और धीरे धीरे वो और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एमवीपी के प्लेयर्स के साथ इस वक्त एक और बैटल छिड़ती हुई नजर आएगी आरक्यूएक्स के खिलाड़ियों की। ताजो को डैमेज दिया गया, चेज किया जा रहा है ताजो को, वो हील अप होंगे, किस तरीके से हील अप होते नजर आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल। ग्लोबल मेडिक का इस्तेमाल किया जाएगा, रिपेयर किट भी लगाई गई है, साथ ही साथ ग्रेनेड को किया जा रहा है। विकी क्या उनका ग्रेनेड काम आ पाएगा, बट पीछे की ओर से भी एक खिलाड़ी आता हुआ नजर आए। ताजो चारों तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है, क्या वो यहाँ पे मुश्किलों में आ पाएंगे? जी हाँ, शॉट करेक्ट हो चुका है और ये कॉल आ चुके, बट विकी गिरेंगे, रिटेलिएशन आएगा, कोकू के द्वारा इत्ताजो को गिराया गया। बट एमवीपी के प्लेयर्स वो धीरे धीरे आगे बढ़ते और इत्ताजो के लिए वो कवर बनाते हुए नजर आएंगे। रिवाइव बेहद जल्द मिलेगा और आरक्यूएक्स को पीछे की ओर हटाया जा रहा है। इसे बोलते हैं टीम वर्क, इसे बोलते हैं परफेक्ट कवर। जब जरूरत थी टासो को तब कवर दिया गया और ऐसे ही बनती है परफेक्ट टीम्स। देखिए इसी तरीके से जो टीम्स की कहानी है ना वो शुरू होती है, इसी तरीके से जो मंच है वो बड़े होते जाते हैं। और जिस तरीके से ये एमवीपीज खेल रहे हैं, डेफिनेटली इनके नाम जिस प्रकार से उसको पूरी तरीके से जस्टिस दे रहे हैं। हालांकि यूनिक स्पोर्ट्स आपको कुछ करने की जरूरत है। इस बार फिर से अर्ली एलिमिनेशन, यहाँ पे एलिमिनेशन का सबब आपके लिए बन सकता है। लकी की बात करें, वो भी नॉकडाउन वहां पे किए गए हैं। दी एमवीपीज वो रुक नहीं रहे, आरक्यूएक्स के ऊपर भी वार करते नजर आ रहे। वुल्व्स की बात करें, इस बार 7 एलिमिनेशन के साथ एक अच्छा स्टार्ट इनको मिला हुआ है। सेंटा कैटरीना से रोटेट करते हुए कन्फाइनमेंट की तरफ ये जाते नजर आ रहे हैं और उस एरिया में भी आई थिंक काफी सारी टीम्स हमें नजर जरूर आई थी। एमवीपीज का वार यहाँ पे राइज स्पोर्ट्स के ऊपर, सामने टीम कोई भी हो एमवीपीज नहीं रुक रहे। सामने है राइज स्पोर्ट्स, ये वही रोस्टर है जिसने यहाँ पे एशिया इन्विटेशनल तक में काफी क्रेजी परफॉर्मेंस दिखाई थी। और अभी के लिए दी एमवीपीज ये वो उभरते सितारे हैं जो सामने नाम देख के एलिमिनेशन नहीं निकाल रहे, बस अपना अपोनेंट देख रहे हैं और बस अपना ये फायर पावर दिखा रहे हैं, अपना दबदबा दिखा रहे हैं और पूरी लॉबी को हिला दे रहे, पूरी लॉबी को डोमिनेट कर रहे हैं। आइकॉनिक वो भी यहाँ पे नॉकडाउन पड़े जरूर है। साहिल को भी फिनिश किया जाएगा, टीम है वो एवोल्यूशन, इनको समाप्त किया जाएगा। ये बड़ा झटका है रीगन, काफी बड़ा झटका टीम एवोल्यूशन के लिए। बिल्कुल, देखिए इवॉल्व होना था इस बार और मुझे लगता है वो इवॉल्व हो नहीं पाए हैं। दूसरी बार
थोड़ा सा खतरा बढ़ता हुआ इनके ऊपर 7वें पायदान पे थे और अभी देख सकते हैं किस तरीके से इनके ऊपर जो कठिनाइयां वो बढ़ती नजर आ रही है, बट मैड गॉड के लिए मुश्किलें, इनसेन पावर के प्लेयर्स उनके बेहद करीब है। सस्ती और जैकिन सोलो बिल्कुल करीब जाएंगे और जैकिन सोलो को देखिए वो बिल्कुल आराम से उस खिलाड़ी को टेक डाउन करके एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे। 7 एलिमिनेशन इनसेन पावर के पास। ओल्ड हैम्पटन का वो इलाका, R2V के प्लेयर्स उस इलाके पे बेहद करीब। जैकिन सोलो को चेस करना पड़ेगा, आइको वो मौका अच्छे से ही मिलता है। जैकिन सोलो को गिराया गया, बट इसी दौरान डिवाइन को देखिए बहुत ही तेजी के साथ अपने प्लेयर को रिवाइव किया गया, बट सस्टी उनका भी टेक डाउन आता नजर आएगा कॉपी के द्वारा, बट स्टिल आइको वो फिर आगे जा रहे हैं, उनके ऊपर भी रश किया जाएगा। यूएवी का इस्तेमाल, दोनों की शील्ड का इस्तेमाल, यूटिलिटीज का प्रॉपर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी कैरेक्टर स्किल्स का भी वेटी बेहद करीब रहेंगे। स्नेक के द्वारा ग्रेनेड कुक किया जा रहा, आइको वो फिर करीब जाएंगे और लीजिए कॉपी उनको फिर से टेक डाउन किया जाएगा। आइको बहुत करीब जाते हुए शॉट कनेक्ट करेगा, ड्राइव दोनों खिलाड़ी यहाँ पे टेक होते हुए नजर आएंगे। इनसेन पावर वो 2 प्लेयर्स के साथ 7 एलिमिनेशंस उनके पास, बट सस्टी वो इस इलाके पे अब इकलौते बचे। उन्हें इस एरिया को छोड़ के जितना तेजी से हो सकता है उतना तेजी से भागना होगा, क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पे स्पॉट किया तो क्या एलिमिनेशन भी सामने वाली टीम को बहुत आराम से मिल जाएगा। अभी अपने कदम पीछे हटाना ही एक अच्छा फैसला है, लेकिन सामने जिस तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पे बीएफपी के खिलाड़ी होने वाले हैं। हालांकि जय उनको कवर देने के लिए वहाँ पे मौजूद जरूर है, बट अभी पूरी टीम मुसीबत में नजर आ रही है। दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पे जो है अपने स्टेल्थ मोड पे नजर आते हुए छुप के खेलना पड़ेगा। रिवाइवल जब तक नहीं हो जाता एटलीस्ट तब तक यहाँ पे हॉर्स राइड किया जाएगा और सीधे जाते नजर आ रहे श्राइन्स की तरफ। वेंडिंग मशीन पे जल्द से जल्द जाना होगा। सुस्ती को 4 एलिमिनेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब एलिमिनेशन पीओवी से देखें तो अपना काम बखूबी ये टीम कर चुकी है, बट R2V वो श्राइन्स की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे मुसीबत में नजर आएंगे इनके टीममेट। सुस्ती वो 4 एलिमिनेशन के साथ नजर आए थे और फाइनली वो इंटेल मिल चुका है, पीछे जय आ चुके हैं। वो जानते हैं कि अभी वो मदद नहीं कर सकते और ये लीजिए लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके बच बचा के वो आ जरूर गए। दूसरी छोर पे MVP वो भी यहाँ पे एक अच्छी होल्डिंग पोजीशन ढूंढ रहे हैं जोन के भीतर। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, BFA के ऊपर वार करते नजर आ रहे हैं। MVP बना BFA चलता हुआ और MVP देखिए किस तरीके से स्प्लिट प्ले कर रहे हैं, घेरना चाह रहे हैं यहाँ पे BFA के खिलाड़ियों को। वॉल्स लगाई, रुपेश बिल्कुल कतरा नहीं रहे, चार्ज कर रहे हैं और इसके साथ फायर को भी कॉल देंगे कि आइए अब मैं आ चुका हूँ आपके साथ। बिल्कुल देखिए कॉल देने के साथ साथ इस फाइट को जीतना भी जरूरी है। सामने की ओर से रश किया गया, MVP के प्लेयर्स आगे बढ़ते, फायर ने फीनिक्स को गिराया, आस्ट्रीट को भी गिरा दिया, 2 प्लेयर्स गिर चुके हैं। रॉजर का भी यहाँ पे समापन होता हुआ। क्या यहाँ से ब्लैक फ्लैग आर्मी का एलिमिनेशन निकट है? जी हाँ बिल्कुल निकट है, सिर्फ इकलौता प्लेयर है उनके पास, बट MVP 7 एलिमिनेशन उनके पास आ चुके हैं। एक अच्छी फॉर्म में ये टीम आ चुकी है, सारे के सारे प्लेयर्स इस वक्त एक गति के साथ आगे बढ़ते हुए, और देख सकते हैं आप मॉन्स्टर ट्रक का इस्तेमाल करते हुए खिलाड़ी रोटेशन ले रहे हैं, बेफॉन के इलाके के आसपास से निकलते हुए एक बढ़िया इलाके पे जाने की तैयारी करते हुए। एक हायर एडवांटेज में आपको जाना पड़ेगा, बस वहां से आप बड़े वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं, बड़े फिनिशेस, बड़े फ्रैग्स निकाल सकते हैं। और किस तरीके से इस वक्त यहाँ पे ये टीम रोटेट करके आगे बढ़ती है ये भी देखना होगा। राइज स्पोर्ट्स के प्लेयर्स थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर देखने को जरूर मिल रहा है, बट जैकिन सोलो को गिराया गया है। राइज स्पोर्ट्स इस वक्त एक अच्छी फॉर्म बरकरार रखनी पड़ेगी, तीसरे पायदान पे चल रहे हैं, बट हाँ अगर ऊपर आना है तो अपने आप को इस खेल से और ज्यादा उभारना पड़ेगा आपको। 44 टोटल पॉइंट्स आपके पास, ज्यादा दूर नहीं है आप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से। एलिमिनेशंस में और ज्यादा बढ़ोतरी कीजिए और अपनी जगह को पहले या दूसरे पायदान तक आप बहुत आराम से ला सकते हैं। बट वहीं असेंडेंट्स की बात अगर हम करें, इन्हें टॉप 6 में आना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रिफाइनरी का इलाका अपनी यूटिलिटीज, अपनी गन्स, अपनी एबिलिटीज के साथ ये टीम चार्ज अप होती हुई रोटेट कर रहे हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये लोग लगाना चाह रहे हैं, बट कितनी देर तक? यूएवी उनके बेहद करीब है और उस यूएवी में अभी तक तो कोई टीम देखने को नहीं मिला, बट अगर कोई टीम आती है तो इनके लिए भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है। असेंडेंट्स के प्लेयर्स एक साथ मौजूद इस इलाके से, अब देखना ये रहेगा कि रणनीति कहां तक जाती है, कहां से आप रोटेट करते हैं, कहां से आप अपनी जगह को चेंज करके अपने प्लेयर्स के साथ उस एरिया को स्टेबल करते हैं। प्लेयर्स धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हैं, बट सामने ब्लैक फ्लैग आर्मी का इकलौता प्लेयर देखने को मिलेगा। रिवाइव किया गया कुछ खिलाड़ियों को, बट स्टिल अभी भी उस फॉर्म को बरकरार रखना है, अपने प्लेयर्स को आगे लाना है, तो वो लूट को पूरी तरीके से कवर अप करना पड़ेगा आपको। सर्कल के आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्कल का शिफ्ट आएगा, एक नदर्न ईस्टर्न साइड पे सर्कल का शिफ्ट जाता हुआ नजर आएगा। टीम्स को अपने आप को सर्कल में लाना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द टीम ब्लैक फ्लैग आर्मी, टीम इनसेन पावर, RQX के 1-2 खिलाड़ियों को भी ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सर्कल में जैसे ही प्रवेश आप करेंगे वहां से आपके ऊपर गेट
गेट कीप हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके सर्कल को पकड़िए, उसके बाद जाके फाइट को पुल कीजिए। देखिए इस वक्त ज्यादातर जो टीमें है ना उनका अप्रोच यही है कि वो सर्कल को ही यहाँ पे पकड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे बेफ्रंट पे काफी सारी टीम्स आ चुकी है, एक एक स्पॉट को एक एक कंपाउंड को होल्ड करके बैठी हुई है, और अब यहाँ पे अगर फाइट होगी भी तो लॉन्ग रेंज फाइट होने की संभावना काफी ज्यादा है। वहीं पे देयर आर सम टीम्स जो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कि इंसेन पावर, उनका रोटेशन आप देखेंगे बहुत ज्यादा लेट रोटेशन है, और करंट लॉबी के हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक अच्छी नीति है और आसानी से इस गेम में वो अच्छे पॉइंट्स निकाल पाएंगे। बस उनको एक अच्छी टीम के ऊपर चार्ज करना पड़ेगा मौके का, यहाँ पे बस थोड़ा सा मुआयना करके। वहीं पे वुल्फ्स की बात करें, R2V के ऊपर यहाँ पे हमला करते नजर आ रहे, गेटकीप किया जा रहा है वुल्फ्स को। R2V की कॉपी एक अच्छी पोजीशन में है, वो यहाँ पे जो स्नाइपर जो कवर देने के लिए खिलाड़ी होने वाले प्रीडेटर, उनके ऊपर वार कर सकते हैं, और देखना होगा क्या वो नॉकडाउन निकाल पाएंगे। पलटवार किया गया यहाँ पे न्यूनॉन की तरफ से भी कोशिश जारी है, नॉक निकाल पाएंगे कि नहीं अभी तक। देखिए वो जोन का भी डैमेज आता हुआ, कॉपी की पोजीशन प्रोबेबली रिवील हो चुकी है और उनसे भी कवर लिया जा रहा है, लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया गया है और ये इंटेल दिया जाएगा। इस बार देखना क्या होने वाला है, फाइट प्रोबेबली शुरू हो जाएगी। ओपन में खिलाड़ी गिरे जरूर है, यूएवीज को तोड़ा जाएगा, कोई भी यहाँ पे असिस्ट नहीं मिलने दिया जाएगा। जो पेज के पीछे होने वाले, एक तरफ एमवीपीज, उनके ठीक सामने वुल्व्स, और यहाँ पे होने वाले R2V। वुल्व्स बीच में कंपाउंड में फंसे नजर आ रहे हैं। दैट मींस कि एक तरीके से देखें तो उनको दोनों टीम का कवर भी मिलेगा, बट साथ ही साथ उनको भी यहाँ से सोच समझ के निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ से सोच समझ के निकलना पड़ेगा, बट एक और टीम के लिए समस्या की घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, 10वें पायदान पे एक और टीम का समापन होता हुआ नजर आएगा। एमवीपी के प्लेयर्स की अगर हम बात करें, 7 एलिमिनेशंस के बाद एक बहुत ही अच्छी जगह पर ये टीम मौजूद है। 2-2 की शिफ्ट में लोग देखने को मिलेंगे। एनकेजी का समापन हुआ था अभी कुछ ही क्षण पहले, और ये जो लीड है मुझे लगता है बहुत आराम से अब टूटी हुई नजर आ सकती है। एमवीपी के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी जगह को पहले पायदान पे स्थिर करने का, सिर्फ 2 ही अंकों से दूर है, और इस खेल में 2 एलिमिनेशंस निकाल के अपनी जगह को बहुत आराम से वो सबसे ऊपर ला सकते हैं। बट फिलहाल 7 एलिमिनेशन इनके पास है, एक अच्छी जगह पर ये है। सामने से ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लूट को पूरी तरीके से पर्याप्त करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप फाइट्स को कवर अप कीजिए। बट स्टिल RQX के प्लेयर्स वो भी इस इलाके के बेहद आसपास, और एसेंडेंट्स वो इंसेन पावर्स से भिड़ंत लेते हुए नजर आने वाला है। बेफॉन का वो इलाका, ये दोनों टीमें अपने पूरे के पूरे एडवांटेज के साथ यहाँ पे फाइट लेने वाली। इंसेन पावर रोटेट करती हुई नजर आएगी, वो फाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा है, बट असेंडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं रुकिए, आप पहले फाइट को कवर कीजिए, आप पहले फाइट को लीजिए। ये भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार, बट इंसेन पावर वो ब्लैक फ्लैग आर्मी के पीछे की ओर जाके उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक देने वाला है। पाया दूसरी तरफ से कनेक्शंस लगाते हुए और कुछ बड़े फ्रैग्स निकालने की तैयारी कर रहे हैं। 9 एलिमिनेशन इंसेन पावर के पास, वो ब्लैक फ्लैग आर्मी के बेहद करीब। इन दोनों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ सकती है कुछ ही क्षण के अंदर, बट यहाँ से फायदा असेंडेंट्स को बहुत आराम से हो सकता है अगर वो यहाँ से थर्ड पार्टी इनिशिएट करे तो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। इस वक्त फायदा उनको डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन डिवाइन को देखिए, एक्स डिवाइन यहाँ पे फ्लैट फ्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएफटी के ऊपर, और अभी उनके पास एक ये ग्रेनेड भी होने वाला, और ये जो ग्रेनेड है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है उनके लिए। अभी के लिए यहाँ पे मैटकॉट को यहाँ पे टेक डाउन किया गया है, और ये लीजिए सही टाइम पे वहाँ पे टैक्सी टर्नर का इस्तेमाल किया गया, शील्ड बनाई गई। अभी प्रेशर में डाला जा रहा है योहान को, खिलाड़ी आगे चार्ज कर रहे हैं कंपाउंड के भीतर जाने के लिए। कंपाउंड के ठीक नीचे ऊपर होने वाले हैं बीएफए, सामने होने वाले हैं यहाँ पे इंसेन पावर। एक ट्रिपल थ्रेट बैटल हमको देखने को मिल सकती है यहाँ पे। योहान वो एक एलिमिनेशन के साथ नजर आते हुए, ये खिलाड़ी के ऊपर हमने पहले भी चर्चा करी है, ये कमाल करना जानता है, ये जादू बिखेरना जानता है, ये सामने वालों को घुटनों पे लाना जानता है। ये अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए मौके का बस इंतजार है, मुआयना किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी सीख करी जा रही है कि कब चार्ज करना है। बीएफए वो हर एक विंडो को ब्लॉक करने के लिए ग्लू वॉल्स का प्रयोग करते नजर आ रहा है, लेकिन एक विंडो ओपन थी, उसी विंडो से ठीक हमला किया जा रहा है। डैमेज डिलीवर जरूर हुआ, लेकिन वो चिप डैमेज आएगा। दैट मींस कि ज्यादा डैमेज तो नहीं आया कि आप चार्ज कर पाओ, बट स्टिल सामने वालों को यहाँ पे गलती करने पे मजबूर जरूर कर दोगे। एक और फाइट शुरू होती हुई इंसेन पावर उनके ठीक सामने एनाइज ई-स्पोर्ट्स। देखने वाली बात है किस तरीके से अब दोनों में टीम्स जाएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं तीनों टीमों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। बिल्कुल, देखिए तीनों टीमों के लिए खतरे की घंटी बज रही है और वहां पे थ्रोबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वुल्व्स का समापन हो जाएगा 90 पायदान पे। अब 8 टीमें बच रही है इस खेल के अंदर। टीम राइज ई स्पोर्ट्स
वो बिल्कुल करीब है। उन्हें मालूम है कि वहां से थर्ड पार्टी बहुत आसानी से हो सकती है, बट उसी इलाके में इंसेन पावर के प्लेयर्स मौजूद, कौन किस पर पहले स्टैमिन करेगा ये चीज बहुत बड़ा सवाल रहेगा। प्लेयर्स के पास मैच फॉर किल काफी कम, विटी के ऊपर हमला किया गया और डीजे ने टेक डाउन किया, जगह निवेश आगे की ओर बढ़ेंगे। इस छोटे से इलाके में सर्कल का श्रिंक भी आएगा और साथ ही साथ एक बड़ा स्लैमिंग भी होता नजर आएगा। साथ साथ बोल्ट मेकल का भी इस्तेमाल कर दिया गया, पहले को यहाँ पे टेक डाउन करके एलिमिनेट किया जाएगा। ब्लैक फ्लैग आर्मी दे आर नॉट स्टॉपिंग, एक एक करके वो भी एलिमिनेशन निकालते नजर आ रहे हैं। राइस स्पोर्ट्स के राइस को शट डाउन किया जाएगा, बट ब्लैक फ्लैग आर्मी और रेनॉक्स इकलौते प्लेयर अपनी टीम के लिए वो इस एलिमिनेशन को फ्रैग करना चाहते हैं। और लीजिए वो एलिमिनेशन फ्रैग हो नहीं पाएगा, बस वो ब्लू बॉल बहुत ही सही जगह पर लगी हुई थी। 13 एलिमिनेशन ब्लैक फ्लैग आर्मी के पास, बट स्टिल अभी भी इस खेल में 6 टीमें मौजूद। सर्कल अपनी एंडिंग सीमाओं पे आता नजर आ रहा है, ये अंतिम सीमाएं बता सकती है कि कौन इस खेल को जीतेगा। ब्लैक फ्लैग आर्मी इस वक्त 13 एलिमिनेशंस का इकलौता प्लेयर इनके पास। सर्कल में प्रवेश अगर आपको करना है तो आपको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इकलौते प्लेयर हो, आपको दोनों तरफ से यहाँ पे घेरा जा रहा है, आप पे शॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। जोन शिफ्टर को देखिए, वो भी इस वक्त बहुत ही अलग दिशा में जाता नजर आएगा। एसेंडेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। 4 एलिमिनेशन इसके बाद रेनॉक्स के ऊपर हमला किया जाएगा, ऋषि गिरते हुए नजर आएंगे। टीम ब्लैक फ्लैग आर्मी का समापन अब इस खेल में बची है 4 टीमें और 4 टीमों के बीच एक बेहद बड़ी जंग इंतजार कर रही है। इस तीसरे खेल का बुया कौन लेकर जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। इस वक्त यहाँ पे दी एमवीपी से एक और बुया निकालने के तत्पर है। एसेंडेंट्स को एलिमिनेट किया जाएगा। आरक्यूएक्स उनके पास मैन एडवांटेज जरूर है। आरक्यूएक्स का इकलौता खिलाड़ी वो बचा हुआ है। 14 एलिमिनेशन के साथ एमवीपी नजर आते हुए टाजू का M79 इस टाइम कहर बरपा रहा है सभी के ऊपर और उनसे बचने के प्रयास में सभी लगे हुए हैं। अभी के लिए यहाँ पे देखने वाली बात है किस तरीके से ये फाइट चलती है। आरक्यूएक्स वहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव करते एमवीपीज के लिए एक और बुया आ सकता है। वाइप आउट किया जाएगा उस इकलौते खिलाड़ी को, टाइटन को समाप्त करके आरक्यूएक्स का अंत किया गया। लेकिन अभी सामने होने वाले हैं आरटीएक्स। दिस इज गोना बी 4 वर्सेस 4 फाइनल बैटल, फाइनल फाइट। इस फाइट को जीतना होगा, आरटीएक्स कम बैक करना होगा, तो इस फाइट में आपको अपना पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। मिटाजू आगे जाते हुए हुगन का इस्तेमाल किया, नॉकडाउन किया जाएगा। आरटीएक्स का मार खेलते हुए याही का M79 और शाम की शॉटगन के साथ ये बूया जाएगा आरटीएक्स को। आरटीएक्स स्पोर्ट्स कमाल की ये टीम और फाइनली दी एमवीपीज के कहर को, उनकी लय को, उनके इस आंधी को रोक दिया चट्टान बनकर। आरटीएक्स, शाम, मिरिक, याही और डोल्ची, कमाल की ये टीम, कमाल के खिलाड़ी। आरटीएक्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे 19 मैसिव एलिमिनेशन निकालेगी। दैट मींस एक 30 बॉम्बर इनकी तरफ से भी हमको देखने को मिल गया। मतलब आज के दिन रेगन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो, वो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए किसी भी एक टीम का डोमिनेशन हमें देखने को नहीं मिला है। हर एक टीम एक बड़ा गेम खेलती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं एमवीपी के प्लेयर्स एक बहुत ही अच्छी जगह पर मौजूद थे, वो पूरी तैयारी के साथ थे कि वो बहुत आराम से एलिमिनेशंस निकाले। बट यही एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तुषार को और उनके बाकी के सभी टीममेट्स को एक बहुत आराम से एलिमिनेशन निकाला गया। यही का वो एक लॉन्चर पूरी की पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा कहर बनता हुआ नजर आया। बट अगर आप बात करें पूरा टीम स्टार्ट्स की, तो आप देख सकते हैं शाम, याही, डोल्ची और मिरिक की ये जोड़ी काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई ऑस्कर को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए नजर आएंगे। शाम एमवीपी भी रहे हैं इस गेम के। अगर आप बात करें याही A124 का बेहतरीन इस्तेमाल, क्रूम की एबिलिटी को यूज करे मिरिक ने, और डोल्ची राफेल और मॉर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बो यहाँ पे यूज करते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात एलिमिनेशंस की अगर हम बात करें, शाम ने 8 एलिमिनेशंस का योगदान दिया, जो कि अपनी पूरी टीम में सबसे ज्यादा है। बट वहीं अगर हम बात करें याही, उन्होंने 5 एलिमिनेशंस निकाले हैं। मेरे के खाते में जाएंगे 2 एलिमिनेशंस और डोल्ची ने 4 एलिमिनेशंस का योगदान दिया। बट ओवरऑल देखा जाए तो डैमेज के अंदर डोल्ची अपनी टीम में सबसे अव्वल नंबर पे रहेंगे। 4171 का डैमेज, एक बड़ा तगड़ा गेम खेल दिया आरटीएक्स ने। जी हाँ, चलिए अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी की तरफ, एमवीपी ऑफ द गेम। और वो गेम है, वो खिलाड़ी है यहाँ पे आरटीएक्स शाम। आरटीएक्स स्पोर्ट्स की तरफ से 8 एलिमिनेशन किया, 2889 का डैमेज डील किया और 5 असिस्ट भी किया है। ऑस्कर का इस्तेमाल करते हैं, वेलियन डैश यहाँ पे अपनी टीम के एंट्री फ्रैगर है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए थीवा का भी इस्तेमाल करते हैं, सो दैट जो फाइट्स ये तकरीबन हारने वाले भी होते हैं ना, टीम वर्क से ये फाइट भी जीत जाते हैं। ड्रैकी का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट इनके अपोनेंट इनसे बच ना सके। मेडिकिट जैसे ही इस्तेमाल करेंगे पोजीशन रिवील हो जाएगी। वुडपेकर काफी बढ़िया चलाते हैं, बिल्कुल रेगन की तरह। बट गेम स्टैंडिंग्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरटीएक्स स्पोर्ट्स यहाँ पे सबसे ऊपर नजर आ रही है 31 पॉइंट्स के साथ।
19 एलिमिनेशन यहाँ पे निकाल के इन्होंने बूया किया है। दी एमवीपीज होने वाले दूसरे पायदान पे 24 पॉइंट्स इनके पास भी है, मतलब कंसिस्टेंट है, बूया ऑलरेडी निकाल चुके हैं और जो चाहिए था वो चीज ये करते नजर आ रहे हैं। बीएफए अगेन एक अच्छा गेम, इसी तरीके से चलेंगे, टॉप 6 में जगह अपनी बना सकते हैं। इनसेन पावर 16 अंक इनके पास भी, 11 एलिमिनेशन, वहीं पे एराइज ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले में सिर्फ 11 अंक मिलेंगे। अगर इस मुकाबले के पॉइंट्स देखें तो एक बात साफ है कि ज्यादातर अंक ना ऊपर वाली टीमों ने ही निकाल लिए हैं। बिल्कुल, देखिए ऊपर वाली टीमों ने काफी अच्छी तरीके से अंक अर्जित किए और ये अंक उन्हें और ज्यादा आगे लेके जा रहा है, बट क्वालिफिकेशन है टॉप 6 का। बट फिलहाल उससे पहले सर्कल एनालिसिस पे चलते हैं। आरटीएक्स ई-स्पोर्ट्स और एमवीपीज के बीच ये जो सर्कल एनालिसिस है बहुत काफी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलेगा। वेल, आरटीएक्स ई-स्पोर्ट्स वो इस वक्त सबसे पहले कमांड पोस्ट के इलाके के बेहद आसपास देखने को मिले थे, बट वही एमवीपी की बात करें, उनका रोटेशन काफी काबिल तारीफ था। कन्फाइनमेंट, दिन काउंसिल हॉल, दिन रिफाइनरी, दिन उसके बाद फिर से कन्फाइनमेंट और बेफोन के इलाके के बेहद आसपास, और फिर अंत में जाते जाते बेफोन और कन्फाइनमेंट के बीच वो फाइट होती हुई नजर आई थी, जहां पे ये खेल को आगे बढ़ाया गया और एमवीपीज को रोका गया। बट सबसे बड़ी बात है एलिमिनेशंस की, अगर हम बात करें तो पहला सर्कल हो या दूसरा सर्कल, दोनों ही टीम ने काइंड ऑफ, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा सिमिलर एलिमिनेशंस पे ही फोकस किया, ज्यादा किसी ने फोकस किया नहीं था दूसरे पहले सर्कल के बाद। बट हाँ, तीसरे सर्कल से अगर हम देखें तो आरटीएक्स ने एक अच्छी ले पकड़ना शुरू किया, 4 एलिमिनेशंस निकाले, उसके बाद 1 एलिमिनेशन, और उसके बाद आते आते 5वें सर्कल में दोनों ने कुछ एलिमिनेशंस का योगदान दिया और आरटीएक्स ने इस खेल को जीत लिया। जी हाँ, चलिए यहाँ पे सर्कल एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अभी तक कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ये जानने के लिए चलते हैं टुडे स्टैंडिंग की तरफ। अभी द एमवीपीज वापस से आ जाएंगे नंबर 1 पोजीशन पे, 68 टोटल पॉइंट्स इनके पास होने वाले, एक बूया निकाला, विद देयर कंसिस्टेंसी दे आर ऑन टॉप। आरटीएक्स ई-स्पोर्ट्स एक बड़े गेम के साथ 2 रैंकिंग की छलांग लगाई 63 पॉइंट्स के साथ। वहीं पे एनकेजी ई-स्पोर्ट्स 55 अंक के साथ यहाँ पे नजर आते हुए नंबर 1 पोजीशन पे थे, लेकिन अभी गिर कर यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ चुके। राइज ई-स्पोर्ट्स भी यहाँ पे 4th पे नजर आते हुए। इनसेन पावर एंड एसेंडेंट्स फिलहाल टॉप 6 में नजर आ रहा है। इनसेन पावर की एक छलांग यहाँ पे देखने को मिल रही है टॉप 6 के भीतर। वहीं पे बीएफए वो भी यहाँ पे टेबल में राइज करते नजर आ रहे हैं। R2V ई-स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में गिरावट है। RQX कुछ करने की जरूरत है। टीम एवोल्यूशन, वुल्व्स एंड यूनिक ई-स्पोर्ट्स, आई फील इस तरीके से बात बनेगी नहीं। काफी बड़े नाम यहाँ पे खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन उस तरीके से नहीं आ रहा है। टीम एवोल्यूशन प्रेशर में खेलना बखूबी जानते हैं, बट क्या वो बचे 3 गेम्स में उस प्रेशर में खेल पाएंगे? क्या वो टॉप 6 में अपनी जगह बना पाएंगे? बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अब वो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रेशर बढ़ता जाएगा और आपको अच्छा खेलना ही होगा, बिकॉज आपके पास अब अंतिम 3 खेल बचे हैं। 50% खेल समाप्त हो चुका है, आपका ग्रुप नंबर बी आधा खत्म हो चुका है, बट अब वो आखिरी मैं कहूंगा 3 मुकाबले बच रहे हैं, और अब ये 3 मुकाबले डिसाइड करेंगे कि आप लोग आगे आ